children, today let's start with chapter number 9, list and tables in HTML5. So in this chapter, we will study about different lists and tables. So in HTML, tables and lists are essential elements for organizing and presenting content on the web. Tables allow you to display structured data in rows and columns, and which helps you to create structured lists of items. So let's study about the different types of list. First is unordered list. Unordered lists, they are used when the order of the items does not match. The list items are typically displayed with viewpoints and other symbols, right, to indicate each item. You can create an unordered list using UL elements and list items using L elements, right? Then we have ordered lists, which are used when the orders of the item is significant. And the list items are displayed with numbers or other sequential marker. You can create an order list using OL elements and using LL elements. Right? Now, definition list, which are used to define terms. मतलब आप corresponding definition से different terms को क्या कर सकते हो define कर. So, they consist of list terms associated with the description. You can create a definition list using TL element and term definition using DTREs. Right? The type of attribute accept several values so that you can define the type of numbering or lettering you want to use. Now, creating list. You can use the following elements to create a list. Unordered list, ordered list, definition list, and DT means term in definition list and DD means description in definition. Now follow the steps. Choose an appropriate list type जिसमें आप decide करोगे whether you want an unordered list or ordered list. Use the corresponding HTML elements for unordered list to use. You can insert the different list item and add content to each item. Right now, nested list. What are nested lists? Nested list refers to practice of placing one list inside the another. This means that you have a list within another list, creating a hierarchical structure. Nested unordered list, which can be nested with another order list, so that what you can create hierarchical structure. Right? Now, nested ordered list, which is nested with another order list. An example is there. ये आपको एक प्रोग्राम दिया, आउटपुट दिया. जैसे आउटपुट क्या होगा, मेन कोर्स में पास्ता, पनीर एंड यहाँ पे आपको दिया हुआ है नेक्स्ट में चॉकलेट केक एंड चीज केक. नाउ नेस्टेड डेफिनेशन लिस्ट, विच इज अनदर डेफिनेशन लिस्ट जो आपको क्या प्रोवाइड करता है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. राइट, वहाँ पर द डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड. हियर यू विल सी आपको दिया से वेब डेवलपर्स के बारे में डिटेल प्रोग्राम दिया. नाउ क्रिएटिंग टेबल्स. टेबल्स आर यूज्ड टू डिस्प्ले डाटा इन अ ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर. राइट, नाउ बेसिक टेबल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम. टेबल हेडर जो आपका टीएच एलिमेंट से होता है, राइट. टेबल डाटा आपका टीडी एलिमेंट डिफाइन करता है, राइट. टेबल कैप्शन, आप कैप्शन यूज करते हो यूजिंग कैप्शन एलिमेंट. ये आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और टाइटल ऑफ द टेबल प्रोवाइड करो. नाउ स्टेप 1, यूज द टेबल एलिमेंट. इनसाइड द टेबल एलिमेंट आप टीआर एलिमेंट का यूज करोगे. विद इन ईच रो यू विल यूज टीएच फॉर द टेबल हेडर एंड ऑप्शनल टीडी फॉर द टेबल डाटा. नेक्स्ट, टेबल एट्रीब्यूट्स. So, table can be further customized and formatted using various attributes, right? Like border, जो आप specify करते हो, cell padding, जो space between the cell देता है, cell spacing, ये space between the cell provide करता है, width and height, cool span and row span, मतलब multiple core और rows को क्या करता है, useful करता है, in merging. ठीक है, ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट टिम बर्नर्स-ली CERN न्यूक्लियर फिजिक्स ने क्या करा, डिफाइन करा है. It's alt attribute and you can create a real-time checklist in the HCI. Right? This is all about in this chapter. Hope you understood. Now we will meet in next class. That's all for today. Thank you.